Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे and I hope you are enjoying my classes and understanding whatever I am teaching to you. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं, आप लोग दिलचस्पी से सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो कुछ मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. So students, in our previous class we have learned sports and games Unit-2 from 9th class English textbook. In that we have completed glossary part. Now we are going to learn our second part from A reading. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्लॉसरी यानी कि कुछ नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वोकैबुलरी. सो स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं यहाँ हमारे वोकैबुलरी पार्ट फ्रॉम ए रीडिंग. इन वोकैबुलरी पार्ट वी हैव सिनोनिम्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का क्या मतलब है? सिनोनिम्स ए वर्ड which has the same meaning or a similar meaning as another word is called synonym. So इसका मतलब है ऐसा लफ्ज़ जो लिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन एक जैसे मायने रखते हों, जैसे कि मुतरादिफ लफ्ज़ जिसको बोलेंगे सिनोनिम्स, उर्दू में बोलेंगे मुतरादिफ, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो लिखने में डिफरेंट हैं बट उसके मीनिंग सेम है. इन रिटन पार्ट द वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे हैव द सेम मीनिंग, दैट इज़ कॉल्ड synonym. So here you have some words in the table. You have to write the words synonyms. Here we have first word quench. Quench means thirst, satisfy your thirst, यानी कि अपनी प्यास बुझाना, प्यास बुझाना. तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स बनेगा extinguish, squish, put off. So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. You can write put off or squish and extinguish. So these are the synonyms of quench. Quench means बुझाना, प्यास बुझाना, आग बुझाना, like that. Now our next word is glamour. Glamour synonym is elegant, and allure and attraction. So glamour का मतलब है दिलकश, पुरकशिश, नज़र फ़रेब, सहर, जादू. These are the synonyms. So next word passion. Passion का मतलब है जज्बा, जोश, शौक़. तो इसका आएगा यहाँ पर पेन, suffering,
affection, and string, devotion, feeling. These are the synonyms. Now, next word is persistence. Persistence means इसरार करना, ज़िद करना, इस्तिक़ामत करना. ये सारे मीनिंग एक ही हैं पर लफ्ज़ अलग अलग हैं. They have the same meaning but the different word. So persistence is synonym is endurance. Next, stamina, patience, like this, and dedication and constancy. So they are the different words but they have the same meaning. Next is arrogant. Arrogant, मगरूर, तकब्बुर, खुदसर, गुस्ताख, मुतकब्बिर. So in English the synonyms are modest, superior. Here the words they have the same meaning but in written they are different from each other. Now self-importance, next pounding. Pounding मीन्स धड़कना, दिल का धड़कना, धड़कन, आपकी नब्ज़ जो तेज़ चलती है. सो इन इंग्लिश ईको, anguish and twins. So these are the different words but they have the similar meanings. So those words are called synonyms. Understood? I hope you are all understood. Now come to the next one, suffixes. Suffixes. What is suffixes? Suffixes यानी कि उर्दू में होता है لاحقے. मीन्स किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाने वाला हुर्फ. Suffixes is a letter or group of letters, for example ly or ness, which is added to the end of a word in order to form a different word. That is called suffixes. So some words have ly, ness and NAL and FUL. These added to the end of the word, that is called suffixes. Understood? A suffix is a letter or group of letters, for example ly or ness, which is added to the end of a word in order to form a different word. Example quick, when you add ly to quick it's become quickly. Like kind, you have to add ness at the end, it becomes kindness. So these words are called suffixes. किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाने वाले हुर्फ को बोलेंगे suffix. So some words are given here. Look at the following words taken from the passage.
competition, excitement, persistence, immediately, wonderful, effortless, childhood, national, intensity. Now pick out the suffix from each word and form a new word of your own in the table given below. One is done for you. Here the word is competition. The suffix is ion. New word is compet completion. Competition. So students, first you have to find out the suffix in these words. So in these words, what are the suffixes? First one is ion, tion, or ment, or ent. Next, persistence, ence. Next is immediately, ly. Next is wonderful, ful, full. Next is effortless, less, effortless. In childhood, hood, hood. Hood. National, national, al or nal. Intensity, intensity, ity or sity. These are the suffixes. So students, these are the suffixes. You have to write suffix from each word. First one is ion, second one is ment, third one is ence, next ly, next ful, next effortless, less, next hood, childhood, hood, next national, nal, next intensity, so ity or sity. So first one is competition. When you add ion, it is a competition, but here new word you can write completion. It also have ion in the end. सो यहाँ कंपटीशन में ion लास्ट में है. सो इससे मिलता हुआ दूसरा नया वर्ड है कंप्लीशन, जिसमें कि ion एंड में है. सो सेम यहाँ पे आपको यहाँ पर है एक्साइटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे एक्साइटमेंट. तो मेंट, यहाँ पे मेंट और दूसरा कौन सा न्यू वर्ड बनेगा मेंट का, वो आपको यहाँ लिखना है. लाइक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बन गया. यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आपका है परसिस्टेंस. परसिस्टेंस तो ENCE और दूसरा वर्ड जिसमें कि ENCE हो, लाइक प्रेजेंस, ENCE प्रेजेंस, और सेंटेंस, ENCE, राइट. नेक्स्ट इज immediately, immediately, ly and ly. So kindly, new word is kindly, and slowly, so ly words. Next, full. Here you have wonderful. The new word you can write powerful, powerful, beautiful. Yes, next is less, effortless,
effortless, countless, less, less, countless, and fearless, careless, hopeless, endless, like this. So next is hood, childhood, hood. Hood, new word is motherhood. Sorry, motherhood, brotherhood, sisterhood, like this. Next one is national, al, al, national, al. You can write final and criminal. So al, al at the end, adding al. Now last one is intensity. At the end you have ity or sity. So new word, like dignity, dignity, ity. At the end ity, you have ity. Now quality, quality, so ity. So these are the suffixes. So hope you are all understood this class. So students, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये सारी क्लास, उम्मीद करती हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से दोबारा इसको डिटेल में समझाऊंगी जो भी आपको समझ नहीं आया। होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।